था था वो बंदा। हाँ, मतलब किलर था। 3 गेम वाली शायद बात ना हो भाई में, बट द ही वाज कॉन्स्टेंटली, एंड आल्सो द फैक्ट कि कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करते थे। हाइट 6 फुट ही थी, ज्यादा थी नहीं। तो ऐसा लगता था कि यार ये बंदे को देख के कुछ हो सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स माइकल जॉर्डन एंड कोबी ब्रायंट, आई थिंक दीज आर द टॉप 3 प्लेयर्स। एंड Yeah, कोबे RIP Kobe, but what a legendary player. what a legend, bro. Crazy guy. Yeah, I think he was amazing. He's definitely my number two for sure. Number three yeah, is where it gets a little murky, right? You can't choose. yeah, Like too many good yeah. players in the number three. We But remember yeah, like all these guys, Tracy McGrady, T Mac, Paul Reggie Miller was also great. Pierce, Like they showed, Regiment, exactly. he was a crazy guy, dude. They didn't give him enough credit in this documentary. Like he really gave How? Michael a run for his money, you know. But of course, yeah. I mean, So it was it was about about Jordan, so Jordan, but that's Reggie why. Miller is Uh, he's a killer guy. And then of hmm. course, but I like a lot of people don't know, but जो डेनिस रॉडमैन उस टाइम उस जमाने में कर रहा था फैशन के साथ और पर्सनालिटी के साथ, वो आजकल के लौंडे कर भी नहीं सकते मुझे लगता है। आई थिंक जस्ट स्टैंडिंग लाइक वो यू नो ट्राई नहीं कर दैट। रहा था। वो ट्राई नहीं कर रहा था। ही he वाज हिम। was he just being was himself. he was he was the he was the rod D rod, like Yeah, amazing yeah, man. yeah. But I like I think it was was legend. Legend था। but है अभी but भी। like of course, but पिपिन को मैंने डिस्कवर किया इसमें, स्कॉटी पिपिन हम्म। को। मतलब एंड फिर उनके शूज आते हैं एयर मोर अप टेम्पो नाइकी के साथ, दैट्स माय फेवरेट सिलुएट्स। बट आई डिस्कवर्ड हाउ लाइक एक अलग सी पर्सनालिटी, मतलब अगर आप उनको देखें और सोचें पर कि ऐसे लगता नहीं है कि वो गे बॉल प्लेयर है ना, इतना चिल है वो बंदा। है ना, इतना ज्यादा इट चिल लुक्स है लाइक अ वो। गोल्फ Yeah, exactly. प्लेयर। But tell me something, how did you get into like the whole sneaker vibe? Like what made you, is it basketball? Bro, basketball. Definitely Hmm. basketball. I got into sneakers because of basketball, and I got into basketball more because of the sneakers. It's, I don't know. I just, मैं देखा and I just loved the way these players used to look. You know, these shorts, these vests, and then nice pair of sneakers, They were chill, yeah. and yeah, very chill. तो शुरू तो इसलिए करी थी क्योंकि कूल गेम होती थी और सोचा था अभी लड़की वड़की पटाएंगे बास्केटबॉल खेल के, वो but तो it didn't work out that always way, was the plan, yeah, yeah. and then we मुझे discovered याद है you. मुझे याद है I had gone for the, I was super skinny bro when I was 14 15 ना, मेरी मेरी यही height थी। I was already Uh, 6'4" wow. and I was only 55 kgs, तो Oh, literally एक डंडी की तरह। तो we had gone, I remember for the school nationals, uh, my college had won the state championship, तो मुझे uh, महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट किया गया था। uh. And at the same state championship पे there were the Xavier's girls team which won every year। Bombay की Xavier's girl, they won every year, मतलब there was no other team only in Maharashtra which played basketball। And I remember like starting to play basketball really seriously because of the Xavier's girls team। कुछ भाव नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। They didn't care at all। There was a Hmm, dude in my team called Martin। hmm. That guy got so many girls, man। I don't know what it is। He was such a bad player, bro। Select भी Oh, नहीं God. हो, but he got all the chicks। हमारी टीम में भी एक लौंडा होता, he was really tall, मतलब उसको देख के आप सोचो, मतलब मैं उसको देख के कहता था यार अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं तो डंक मारता, और मतलब मैं तो किसी को अपने आसपास ही ना लगने देता। भाई वो हिल के नहीं राजी होता था। He was such a bad player. Did you face any of any of such problems? You're just tall, but and then you're Yeah, like, yeah। No, but I don't think they wanted to play, bro। उन लोग को ऐसे लगाया गया था टीम में कि आप खेलो, अभी हाँ, आप लंबे हो तो खेलो। लंबे हो तो खेलो। खेलो, हाँ वही सीन था। और फिर लोग पूछते थे, आर यू टॉल बिकॉज यूर प्लेइंग बास्केटबॉल, आर यू प्लेइंग बास्केटबॉल बिकॉज यूर टॉल, एंड दे नेवर हैड एन आंसर। पता नहीं अभी, अभी अभी इट्स बिकम लाइक आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई मेड दिस डिसीजन टू प्ले बास्केटबॉल। True story, man. True story. But yeah, I remember like, but tough So come luck, back to the bro. shoes. Let's come back to the shoes. So like, okay, Hmm. so what did you like about like collecting the shoes? Because I know that you're a mad sneaker collector, right? You have like Yeah, a freaking room in your house. yeah, Like a, yeah, yeah. I mean now there's a bunker, right? So like what did you I saw one video where you were setting up your shoes in that room.
and somebody was coming and putting one pair down. And so what made you collect them? Like I also love sneakers, but I never got into collecting. Like I have a lot of them, but आपकी तरह नहीं रखता हूँ मैं एकदम, like it's like a Bro, I collection. don't exactly. It's a collection, and which is hard to explain to people. It's I don't know. It's probably it might be a disorder. It might be a situation of the mind. You know, like people like to collect stamps. I just like to collect sneakers. It's it's just that I don't know. I just like so. Even when I was a kid, I was designing sneakers. I was drawing them behind my notebooks, and I went to a lot of shoe company. My dad actually took me to a lot of shoe companies. I haven't told this to anyone. तो हमारे घर के पास एक जूतों की एक्शन शूज की कंपनी एक्शन शूज की फैक्ट्री होती थी. तो मैंने पापा से जिद करी. मैं पापा ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ना एक्शन के जूते बनते हैं ना. मैं पापा से जिद करी, पापा मुझे यहाँ लेके जाओ, मैंने इनको अपना डिजाइन दिखाने हैं. So my dad actually took me there, That's crazy, and dude. that's So you're crazy, really, bro. really And passionate about it, yeah. That's passionate, like nuts. everything. तो मेरे पापा लेके गए वहां पे शूज के. उन्होंने हमें अंदर भी नहीं घुसने दिया. लाइक वाओ, वाओ, कोई ना बेटे, अपना भी अपना टाइम आएगा. बट आई जस्ट स्नीकर्स सही लगते हैं यार. मतलब So अभी टेक्नोलॉजी क्या है वाइज. plan? अभी are you planning to start your own? I mean, of course you have Badfit and you have this thing, but are you starting your own brand? Is there going to be Bro, Badfit? Like, yeah, Bradford is there. Camilo is online, and he wants us to say something in Spanish. What do we say in Spanish? Uh, I don't know if it's Spanish, but I was watching Money Heist the other day, and that song is yeah. then Bella ciao, Bella Bella ciao, ciao, bella ciao, ciao. ciao. It's sad. Camilo only taught me, but ¿cómo está? ¿Qué pasa? That's it. That's it. I'm done. Sorry, bro. That's That's it. I it. remember you told me something, but I forgot. I need to get those Spanish classes. But yeah, so what were we talking about? Shoes. Yeah. So what's happening with your like? Are you starting your own like brand of shoes? What's the scene? Uh, I, to be honest, I had a few. Yeah, bro. That's the only amount of Spanish I know. Sorry, man. So basically, I am, of course, there's Badfit, but now um, uh, I got a lot of offers of collaboration with a few companies. Uh, but I think, and this is what I think. I mean, if if Jordan has his sneaker line, there's a legacy behind it, and I don't think Absolutely. I am big enough to have. See, I don't want people to buy my shoes just because they look fancy. I also want them to have a piece of the piece of my journey. So probably someday when I am when I think, or when people are going to make me believe, the sneaker companies are going to make me believe that I'm ready to probably put out a sneaker. I think that's the day when I'll definitely go out with a sneaker, because for me sneakers are sacred. If I'm Yeah, for sure, wearing man. a flu game, I know, which was of course not the flu game, which was the food poisoning game. Now that we know, but if I'm wearing a flu game, I like there has to be a legacy um, behind everything. There has to like be a substance. What do you think? I agree, man. Like that's the goal, man. Like I'm not. I mean, obviously, like I, I, s- I look up to you in so many ways because I think you've done the journey right, man. You're making it about the journey and not anything else. And I think that's the goal. Like I would give this advice to anybody who asks me. Like I get a lot of like these younger guys coming to me and asking me, bro, how do I proceed? And I'm like, dude, just make it about the journey. Don't forget about everything else. Yeah, Like it's yeah, about like eventually the journey kind of leads you to meet people and like become yourself, and become like yes, you don't know who you are yet, right? yeah, There's a yeah. destiny we all have and we're all chasing Absolutely, that. absolutely. And I So think let's अब थोड़ा सा हिंदी में बात करो, अर्जुन. थोड़ा हिंदी में बात करें, चलो चलो चलो, But I सॉरी think सॉरी. बिल्कुल मतलब मैं I think it's about अब कैसे समझा भी नहीं सकते. Like you can't put it into words कि what it is about. I think ये process है. आप ये It's a चीज process, correct. क्यों कर रहे हैं आप ये समझा नहीं सकते. बस आप ये चीज कर रहे हैं. I mean जैसे बिल्कुल.
जैसे मेरा एक भाई है, वो फिट फिट रहता है, फुल फिट रहता है, सिक्स पैक एंड ऑल दिस, और वो आज से नहीं 10 साल से फिट रहता है। तो मैं उससे पूछता हूँ तेरी मोटिवेशन क्या है? कहता है मोटिवेशन कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को प्रोसेस से प्यार हो चुका है। क्योंकि आप यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस। एंड जरूरी नहीं है आप म्यूजिक, सो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आप एक्चुअली में करना चाहते हो या नहीं, और आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो। कई लोग अपना एग्रेशन या अपनी सारी एनर्जी जिम में चैनलाइज करते हैं, कई लोग आर्ट करते हैं। सोनाक्षी इज ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मतलब ड्राइंग इतनी अच्छी बनाती है, इलस्ट्रेशन इतनी अच्छी बनाती है। सो आई थिंक जो भी आपको करना पसंद है, अगर आप वो करेंगे तो यू कैन बी, आपके लिए इजी होगा, और आप टॉप पे, क्या फिर आप टॉप वॉप नहीं सोचते। फिर आप हम्म ये सोचते हो कि अच्छा काम करना है, अच्छा काम करना है, डिफरेंट करना है, आप ये कर लिया। हम्म। सॉरी, लॉस्ट यू देयर फॉर अ सेकंड, वो आपका कनेक्शन निकल गया। हाँ हाँ, हाँ हाँ, यू बैक। कॉल आ गया था, कॉल। हाँ, सो या आई एग्री मैन टू हाँ, तो आई एग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट मैन कि व्हाट यू से कि हाँ। प्रोसेस इज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ, मतलब उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन आई डू फील लाइक एज एन आर्टिस्ट कि हमें हमारे सामने बहुत डिस्ट्रैक्शंस है आजकल। अभी इट्स नॉट ओनली अबाउट द आर्ट, यू नो। अभी तो इट्स अबाउट द सोशल मीडिया आई अंडरस्टैंड, नंबर्स, एंड इट्स अबाउट या इट्स द numbers now, it's a numbers game, right? या So या या where is that balance? Like where do you find the balance between your art and वो marketing aspect of it, basically जो marketing है? So I struggled with that for years, man. Personally, as an artist, I can only speak for myself, like because I can't speak for any other प्लीज artist. प्लीज ऑल लेकिन इयर्स आई मैंने इस थिंक। चीज के साथ बहुत स्ट्रगल किया कि मैं कितना टाइम दूं। हाँ। हाँ, तो इस चीज के साथ मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे भी फुलफिलमेंट में मिले। लाइक सो आई ऑल्सो फील लाइक या ओके, आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड आई एम एंजॉइंग माई जर्नी। और एंड इट्स वर्थ इट ऑल्सो। एंड ऑल्सो कि यार मुझे बड़ा आर्टिस्ट भी बनना है। लाइक लाइक आई वांट टू मेक द बेस्ट सॉन्ग्स एंड द बेस्ट आई कैन डू। तो उसमें भी ये बेस्ट भी बहुत सब्जेक्टिव है। कंफ्यूजिंग चीज होती है, समटाइम्स सब्जेक्टिव है, सबके लिए सब्जेक्टिव है। तो हाँ। I mean, that's what I've been chasing. I think this is the first year where I know who I am, and that's, to me, that's very empowering because I feel like कि हाँ यार, इतने सालों बाद अभी मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, and I'm going to go after it in such a way कि now that is the test now for me कि अगर ये is the clarity enough to get success. ब्रिलियंट, That's the question. ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, कि अभी ब्रिलियंट, clarity ब्रिलियंट। आ गया है, तो is it enough to get you the success? So that's the test now for me. Yeah, You know, but like when you talk about success, I that's where I I'm know, at. and I respect the fact that you realize it. But now you got the clarity. But the success that you're talking about, what is it like? वो क्या पैमाना है उस सक्सेस का? I'll tell you, for me, it's always been only one thing. अगर आप आर्टिस्ट हो, आप वैसे भी बहुत लकी हो अगर आपके पास काम है। आर्टिस्ट एक चीज है जो इट्स लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट टू बी आर्टिस्ट्स, पर उनको कोई काम नहीं देता, कमीशन वर्क नहीं देता है कोई। हाँ, घर पे बैठे बैठे ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल आर आर्टिस्ट, नो डाउट अबाउट दैट, नोबडी इज टेकिंग दैट अवे फ्रॉम यू इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है, जो आपकी कमाई होती है, लाइवलीहुड जो होती है आर्टिस्ट्री से होती है, तो आई फील लाइक दैट इटसेल्फ इज सच अ रेयर थिंग कि मेरे लिए सक्सेस है कि इफ आई कैन वर्क विद द बेस्ट आर्टिस्ट अराउंड मी, दैट इज सक्सेस। इफ दे टेक मी सीरियसली एंड आई एम एबल टू पुट आउट वर्क एवरी डे, एंड people are giving money for my work, first of all, is shocking still to me कि लोग मुझे पैसे दे रहे हैं नहीं, मुझे ऐसे मत शोज बोलो के भाई। लिए। बहुत अच्छे गाने बनाते हो, you're an amazing performer. I've had the pleasure to perform with you. I've No, but had you the know what pleasure I to mean, bro. collaborate with you. You know what I Of mean, course, I bro. know, I know. It's of course there is, but there's always an element of humility in it, man. Like I feel like कि जितने भी बड़ी हो जाओ ना, you're still lucky to do what you're doing, man. Because it takes one bad move, right? It's one of those things. I agree, bro, and wow, brilliant. I think जो भी ये live देख रहे हैं, I think what a what a patch this past 5 minutes have been. I think you need to have the clarity of what exactly you want to do, and just the fact to be able to collaborate with the best musicians, the That's what it's about, man. recognized, Yeah. the beautiful people is success.
अमेजिंग। दैट आल्सो ब्रिंग्स मी टू, अभी विशाल ददलानी सर ने अभी इंस्टाग्राम पे एक एक मैं सोचा व्हाइल वी आर लाइव आई थिंक वी शुड जस्ट टॉक अबाउट इट। विशाल सर ने एक आर्टिस्ट हैशटैग आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट एक इनिशिएटिव डाला है जो जिसके बारे में जो जो इसके बारे में कि अभी Yeah, back. Yeah. या तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में जो गाना आपको अच्छा लगता है वो आपके लिए हिट है, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। अगर कोई गाना मुझे अच्छा लगता है वो मेरे लिए हिट है, वो चाहे जस्ट इट्स जस्ट द नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरे गाने के किसी के इतने मिलियन व्यूज है तो इट्स जस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु बीन एक्सपोज टू दैट सॉन्ग। बट आई थिंक कितने सारे ऐसे गाने हैं जो शायद लोगों ने सुने नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ शायद वो यूट्यूब पे अच्छा नहीं कर रहे, या उनकी प्रमोशन ढंग से नहीं हुई, या फिर दे जस्ट न्यू they're just not discovered yet. They're probably going to be discovered after a year or so, like दारू बदनाम या Lamborghini for whatever, like जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि I think numbers for me Chinnamma is like right up there, bro. I just love that song. I think we should Thank you, man. I appreciate it, man. I really felt for that song as well, and I wish you were on it, man. Really, honestly. मुझे लगता है कि I अभी अभी I think Ikka bhai has said it correctly. We have to be on a song together soon. bro, And whenever, definitely like, definitely yeah, we have to do it. So, but yeah, let's come back one step. I wanted to ask you something, and it's been on my mind for a long time. What do you yeah. think if I was an artist today? If I'm just starting out, and I don't know what to focus on. Like, what would you think says the most important? Is it still the song? Because when I came into the picture, it was the song. Okay, but nowadays people don't believe that. People believe that it's other things. Like it depends on your social media following, and it depends on this. But what would you advise? Like that one focus. Like we were talking about singular focus, right? What would you advise somebody who's just entering the game? Like what should they focus on? Like that one thing. Bro, it was always about the music. It's always going to stay about the music, right? S- Social media is